A very warm welcome to you all to the channel, the Noor of Law. Today I'll be taking up the part 2 of the Prevention of Corruption Act 1988. For those of you who have come to this channel for the very first time, let me tell you that I have already taken the part 1 dealing with sections 1 to 16 of this act earlier. So please go through the part 1 first so that you are able to understand the basics of this act and then only jump onto this video. So today I'll be taking up sections 17 to 31 and then with this we'll be coming to the end of this act. Let me start with the first slide. Chapter 4, Investigation into Cases under the Act. Now section 17 tells us about the persons who are authorized to investigate the offences under this act. Now it has clearly been mentioned that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, now we all know the act that is followed is BNSS 2023. So notwithstanding anything of under CRPC, no police officer below the rank. Now here the ranks are specified that which ranks officers will be allowed to do the investigation for the particular offences. I have also mentioned this in the diagram that for the Delhi police establishment, not below the rank of Inspector of Police will be investigating the case. In the metropolitan areas, only the officers of the rank Assistant Commissioner of Police or above are allowed to investigate the case. And other cases, these are the residuary cases, all the leftover cases which are not covered by the first two. Here, the designated authority is Deputy Superintendent of Police, that is the DSP. तो या तो वो पर्सन डीएसपी हो, वो पुलिस ऑफिसर, या फिर उससे अबव रैंक का ऑफिसर हो, तभी वो ये वाले ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे. ठीक है. तो दिस वी हैव सीन कि इन द केस ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो ये आपको याद करना है. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के केस में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद के केस में कौन? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. ओके. एल्सवेयर अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो रेजिड्यूरी केसेस में हमने देखा इधर वो पुलिस ऑफिसर डीएसपी रैंक का हो या उससे अबव. ओके. और अ पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, मतलब या तो डीएसपी या फिर उसी की इक्विवेलेंट रैंक का भी कोई और ऑफिसर हो सकता है. Shall investigate any offence punishable under this act without the order of metropolitan magistrate or a magistrate of first class as the case may be, or make any arrest without a warrant. तो मतलब क्या रिक्वायर्ड है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर सीआरपीसी, उसको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो हमने 3 क्लॉजेस देखी, उसमें ये वाले ऑफिसर्स पर्टिकुलरली जो मेंशन्ड है वही इन्वेस्टिगेट करेंगे केसेस को. प्लस क्या जरूरी है? ऑर्डर फ्रॉम होम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. अब हमें पता है कि बीएनएसएस के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पोस्ट को रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है. एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर से ही दैट पर्टिकुलर पर्सन, that particular officer can investigate the offense. ठीक है. Provided that if a police officer not below the rank of an inspector of police is authorized by state government. अब ये एक फॉर्म ऑफ प्रोवाइजो के फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, इसमें एक एक्सेप्शन ले डाउन की गई है कि अगर किसी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक के ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू द पावर इज गिवन बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर. यूजुअली क्या होता है नॉर्मल सिनेरियोज में, वही जो 3 क्लॉजेस हैं वही फॉलो होती हैं. बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, इफ थ्रू अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर
any state government, specific state government has given this power to an officer not below the rank of inspector of police to take up the investigation for the case, then he may also investigate any such offense. Plus, he can do so without the order of judicial magistrate first class. तो ये है वो exception which is very important to be noted. Okay. Provided further, now there is a second proviso to this provision, that an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13, हमने पढ़ा था पुरानी वीडियो में 13(1)(b), illicitly enriching, illicit enriching, जो कि क्या था, intentional, intention was involved, intention was involved, है ना. तो हमने देखा था अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी the offense of criminal misconduct was taking place through two clauses. एक था clause A, एक था clause B, and that clause B specifically dealt with the intentionally illicit enriching of the public servant, है ना. तो उस केस में एक स्पेशल केस दिया है कि shall not be investigated without the order of a police officer not below the rank of superintendent of police. तो इस वाले ऑफेंसेस के लिए 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के ऑफेंस के लिए ओनली एसपी की रैंक का ऑफिसर या फिर इससे अबव रैंक का ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अब इसको भी मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है. प्रोटेक्शन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स ऑफेंस बाय ऑफिशियल एक्ट्स. अब अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कोई भी ऑफेंस को अंडर दिस एक्ट, देन दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करना पड़ेगा, उसको पहले अप्रूवल रिक्वायर्ड है, पहले उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा. ओनली देन ही कैन इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर केस. सो दैट ओनली हैज बीन मेंशन्ड अंडर दिस सेक्शन. Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties. Now we'll be studying this in depth. Please बी वेरी केयरफुल. आपको अपने बैरेक्स ओपन रखने हैं, साथ में अंडरलाइन करना है. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज टॉट हियर. नो पुलिस ऑफिसर shall conduct any inquiry or investigation into any offense alleged to have been committed by a public servant under this act where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties without, मतलब अगर उसको इन्वेस्टिगेट अगर करने हैं ये ऑफेंसेस, है ना, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करने हैं ये ऑफेंसेस, व्हाट ही विल बी डूइंग, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका अप्रूवल? नाउ ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि अगर वो यूनियन अफेयर्स से है मैटर, जो डील कर रहा है मैटर वो यूनियन अफेयर्स से रिलेटेड है, तब तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का. अगर स्टेट अफेयर्स से डील कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है. यहाँ पे आई गेस देयर इज अ मिस्टेक. आई हैव रिटन हियर कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, बट एक्चुअली हियर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यूनियन के अफेयर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. स्टेट अफेयर्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का. एनी अदर है तो वो अथॉरिटी जो उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है, रिमूव जो कर सकती है उसको अथॉरिटी, वो अथॉरिटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा. अब मैं एक बार पढ़ूंगी इसको, बहुत ध्यान से देखना. In the case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union, तो of that government, union government, that is the central government, ठीक है, तो उसका अप्रूवल लगेगा.
अगर जो पर्सन था वो एम्प्लॉयड था अंडर द स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तो किसका लगेगा? स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उस अथॉरिटी का लगेगा अप्रूवल जो अथॉरिटी इज एबल टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, the authority that is competent enough या फिर capable enough to remove him from that office, that particular authority will be providing with the approval to that particular police officer or the investigating officer, whosoever is authorized for the same. ठीक है, provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting. अब अगर रंगे हाथों पकड़ लिया किसी को पुलिस ऑफिसर ने, मान लो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा था ब्राइब या फिर अटेम्प्ट कर रहा था टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, एंड उसी मौके पे पुलिस पहुंच गई या फिर वो पर्टिकुलर ऑफिसर पहुंच गया जो कि ऑथराइज था, जो कि हमने पहले के 3 क्लॉजेस में देखा, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि उसको क्या चाहिए होगा? अप्रूवल। No requirement of approval in such case. So this is an exception to the general rule. ठीक, provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section कितने time period में? 3 months, and can only be extended to 1 month, plus only with reasons to be recorded in writing. Okay, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है जिससे हम अप्रूवल ले रहे हैं, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर द अथॉरिटी दैट इज एबल टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, थर्ड वाला केस। तो अगर वो अथॉरिटी ने अपना डिसीजन देना है तो देन दैट डिसीजन शुड बी गिवन विद इन 3 months एंड ओनली बी एक्सटेंडेबल बाय 1 month। ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का होल सोल पर्पस इज कि ट्रायल में डीले ना हो। 2018 अमेंडमेंट भी कहीं ना कहीं इसी वजह से जो सब्सटैंशियल चेंजेस आए उनका एक रीजन ये भी था, पनिशमेंट्स को एनहांस किया गया, टाइम पीरियड्स का भी ध्यान रखा गया। टाइम पीरियड्स पहले भी कंप्लाई होते थे बट उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो करना इज द मेन गोल, क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस आर वेरी सीवियर इन नेचर, है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस कमिट होते हैं उनमें किसी भी तरह का डीले विल नॉट बी ग्रांटेड, है ना। सेक्शन 18 पे आते हैं, पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक्स। ठीक है, अब अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है, उसको सस्पेक्शन है, उसको ये सस्पेक्टेड है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है एंड फॉर दैट रीजन he needs to see the account books या फिर to inspect the bankers books, then he is allowed to do so if from information received or otherwise, either from the information received or otherwise, a police officer has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered to investigate under Section 17 and considers that for the purpose of investigation or inquiry into such offense, it is necessary to inspect any banker's books, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, उसको allow किया जाएगा to inspect that. ठीक है, he may inspect any banker's books insofar as they relate to the accounts of the person suspected to have committed that offense, या फिर किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट को भी देखा जाएगा उसके द्वारा जिसके पास दूसरे पर्सन का पैसा जो है वो रखा हुआ है, of any other person suspected to be holding money on the behalf of such person। मतलब उसने हेरा फेरी की और अपना पैसा किसी और के अकाउंट में डलवा दिया, है ना, टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो उस पर्सन के अकाउंट की भी सारा जो रिकॉर्ड है उस पर्सन के अकाउंट का, दैट कैन बी सीन बाय दिस
particular police officer and take or cause to be taken certified copies of the relevant entries. तो उसकी certified copies भी निकलवाई जा सकती हैं of the relevant entries therefrom, and the bank concerned, और bank जो है shall be bound. There is a foundation on the bank to assist the police officer in the exercise of his powers under this section. ठीक है, provided that no power under this section in relation to the accounts of any person shall be exercised by a police officer below the rank of superintendent of police. Now this is also a very important point. SP ही सिर्फ ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है in relation to the accounts of the person. ठीक है, unless he is specifically authorized. अगर कोई इस रैंक के बिलो का ऑफिसर है तो उसको एसपी ने ऐसा ऑथराइज किया गया हो, then he can also do. ठीक है, by a police officer of or above the rank of SP. तो अगर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने किसी लोअर रैंक के ऑफिसर को ऐसा ऑथराइज कर दिया है कि आप बैंकर्स बुक या फिर अकाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन को देख सकते हो, then that person can also do that. Okay, otherwise only SP is allowed to do that, or the equivalent rank officer या फिर उसके above rank के officer only. ठीक है, explanation. In this section, the expressions bank and banker books shall have the meanings respectively assigned to them in the Bankers Book Evidence Act. अब Bankers Book Evidence Act क्या बताता है? What are the bankers books? It can be ledgers, it can be the account books, it can be the other records relating to the accounts. For example, let me be very specific with you in terms of this as well. So it can be ledgers, day book, cash books, account books, or every other account which is used in the ordinary course of business. Okay. Now coming to the next chapter, that is chapter 4A, attachment and forfeiture of property. अब जब ऐसा कोई अमाउंट इधर उधर हो रहा है अंडर दिस एक्ट, है ना, करप्शन के केसेस में, है ना, ब्राइब इज बीइंग टेकन और ब्राइब इज बीइंग गिवन, तो उसका अटैचमेंट भी कर सकता है कोर्ट, है ना, प्रॉपर्टी का फॉरफीचर भी कर सकता है कोर्ट. तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं दे आर गिवन अंडर चैप्टर 4A. तो सेक्शन 18A says provisions of Criminal Law Amendment Ordinance 1944 to apply to the attachment under this act. अब इस पे जाने से पहले हमें देखना है ये save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act 2002. अब जो PMLA है, this act is primary. अगर कोई केस PMLA एक्ट में फॉल कर रहा है, then the procedure for attachment and seizure will be followed of that particular act only. This will be given preference if this is applicable. But agar this is not applicable, if this act is not applicable on that particular circumstances, then we'll be falling back upon Criminal Law Amendment Ordinance 1944. The rules given under this with regard to the attachment and forfeiture of property. Okay. So save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act 2002, the provisions of Criminal Law Amendment Ordinance 1944 shall as far as may be apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offense under this act. Is that clear? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, you can ping me in the comment section below. Okay? Feel free to ask doubts. For the purposes of this act, the provisions of Criminal Law Amendment Ordinance 1944 shall have effect subject to the modification that अब अगर उस amendment ordinance के अंदर जहां पे भी district judge mentioned है ना, वहां पे we'll be assuming it to be special judge.
Why is this being done? In order to streamline the process. क्योंकि हमें पता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कॉग्निजेंस कौन लेता है? स्पेशल जजेस लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है ना? तो जो स्पेशल जजेस हैं, जब वही ट्राई कर रहे हैं, वही कॉग्निजेंस ले रहे हैं इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस का, देन वही सेम जज is being given the power to even attach and forfeit the property in order to streamline the process and to prevent delay. ठीक है? तो सेक्शन 19 का आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अ डायग्राम। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वही सैंक्शन करेगा। स्टेट अफेयर्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देगा। सैंक्शन ऑफ अदर अथॉरिटी के केस में जो अथॉरिटी रिमूव कर सकती है वही सैंक्शन देगी, है ना? ये सारी चीजें हमें क्लियर है, ये हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ जिस्ट दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू विद। ठीक है? तो क्या बात करता है सेक्शन 19? सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। तो जैसा हमने पहले के सेक्शन में देखा था कि अप्रूवल किससे चाहिए होगा? सेंट्रल अफेयर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट अफेयर्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 11, 13, 15। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन फॉर दीज पर्टिकुलर ऑफेंसेस 7, 11, 13, 15 alleged to have been committed by a public servant except with the previous sanction save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayuktas Act। इस पे हम बाद में आएंगे क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहले आप ये देखो कि कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा इन ऑफेंसेस के अंडर जब तक अगर उसको सैंक्शन ग्रांट नहीं किया जाता। इन द केस ऑफ अ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है विद रिगार्ड टू द अफेयर्स ऑफ द यूनियन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन रिक्वायर्ड है। अगर वो स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है वो पर्सन या एम्प्लॉयड है अंडर द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट, देन द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है? बिफोर प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन जो अथॉरिटी उसको रिमूव करने के लिए कॉम्पिटेंट है फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है? Now coming to the proviso, provided that no request can be made by a person other than a police officer or officer of an investigation agency। अब मान लो ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन wants to take up the prosecution for any particular person, ठीक है? जो हमने अभी तक देखा that was a person who was either a police officer या फिर investigation officer जो कि sanction ले रहा था, है ना, for the prosecution of a particular person under this act। but अगर कोई private person वही चीज करना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तभी वो sanction कर सकता है अगर उसके पास, तभी उसको sanction दिया जाएगा अगर उसने पहले कंप्लेंट फाइल की under CRPC, today's BNSS, and that complaint got dismissed under section 203 CRPC. Only then he is allowed to go for this sanction. Only then he will be granted this sanction। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर the request has been made by a person other than a police officer or officer of an investigation agency or other law enforcement authority to the appropriate government or competent authority as the case may be for the previous sanction of such government या फिर for authority taking cognizance by the court of any such offences unless such person has filed a complaint। पहले उसको कंप्लेंट फाइल करनी होनी चाहिए, जरूरी है ये चीज। दिस नीड्स टू बी कंप्लाइड विद। then that court has not dismissed the complaint until and unless that court has not dismissed the complaint he cannot go and ask for sanction।
under section 203 of the CRPC and directed the complainant, and court ने उसको direct किया हो to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding. Only then can he go for the sanction thing. Only then can he be permitted to take the sanction against that person. Okay. Provided further that in the case of request from the person other than a police officer, तो ये सेम चीज वही बोली जा रही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट इसी मतलब इसी रिगार्ड में बात की जा रही है इस प्रोवाइजो में भी. बस ये यहाँ ये पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन ले लेता है सैंक्शन या फिर उसको देने की बात की जा रही है, सैंक्शन ग्रांट करने की, है ना, तो उसको सैंक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जो कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन करना चाह रहा है दैट प्राइवेट पर्सन, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिल जाती. ठीक है, तो फर्स्टली दैट पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड देन ओनली sanction will be accorded to the private person. Okay. Provided also that the appropriate government or any competent authority shall, after receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this subsection, endeavor to convey the decision on such proposal within a period of 3 months from the date of its receipt. और जो प्राइवेट पर्सन को सैंक्शन देने की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कितने टाइम पीरियड में अपना डिसीजन लेके उसको अप्रूवल देना पड़ेगा? within 3 months the sanction needs to be provided or the decision with respect to sanction needs to be given. Provided also that in case where the purpose of grant of sanction for prosecution legal consultation is required, such period may, for the reasons to be recorded in writing, be extended for a further period of 1 month. So 3 months limitation period hai and can be extendable only with the reasons to be recorded in writing to 1 month. Okay. Provided also that the central government may, for the purpose of sanction for prosecution of a public servant, prescribe such guidelines as it considers necessary. तो यहाँ पे central government guidelines भी prescribe कर सकता है. ठीक है. Explanation. For the purposes of subsection 1, the expression public servant includes such person. अब यहाँ पे किन पब्लिक सर्वेंट को इंक्लूड किया गया है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे उन पब्लिक सर्वेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है जिन्होंने ऑलरेडी सीज कर चुके हैं अपना ऑफिस. ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है? सो दैट दिस थिंग कैन नॉट बी मिसयूज्ड कि नाउ तो आई हैव रिटायर्ड, एनी पर्सन कैन क्लेम, एनी पब्लिक सर्वेंट कैन से that I have already retired from the service now. How can you make me liable? That person can still be made liable because यहाँ पे public servant के अंदर किसको रखा गया है? Who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed, या फिर who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed and is holding an office other than the office, even if that particular public servant is now holding some other office, still that person can be made liable for his acts that he has done when he was under the charge of the previous office. Okay. Clause 2. Where for any reason whatsoever any doubt arises as to whether the previous sanction as required under subsection 1 should be given by central government या स्टेट गवर्नमेंट, जब भी ऐसा कोई डाउट अराइज होता है क्योंकि अगर क्लियर ही नहीं है कि किसको सैंक्शन देना चाहिए या फिर किसी और अथॉरिटी को देना चाहिए, then what will be done? Such sanction shall be given by that government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office. Then the test will be what? Authority competent to remove. Is that clear?
अगर कंफ्यूजन अराइज होता है कि whether the sanction has to be granted by the central government or the state government, then only that authority who is competent to remove that person from his post, that authority will be given to the power to grant the sanction. Okay, moving on to the clause 3. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, no finding, sentence, or order passed by a special judge shall be reversed or altered by a court in appeal, confirmation, or revision on the ground of the absence of or any error, omission, irregularity in the sanction required under subsection 1, unless in the opinion of that court, a failure of justice has in fact been occasioned. अब आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया होगा? अगेन द सेम रीजन, ताकि अननेसेसरी डीले ना हो सके, अननेसेसरी मिसयूज ऑफ पावर ना किया जा सके. ओके, क्योंकि अगर कोई सैंक्शन गलत तरीके से दे दिया गया या फिर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो गई सैंक्शन देने में, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ जस्टिस. ठीक है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है उससे, देन तो वो सारी प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएगी, है ना. देन तो दैट प्रोसीडिंग विल नॉट बी द वन दैट इज टू बी regarded justiciable. Okay, then that process will be coming to an end in totality if there is a failure of justice that has been occasioned. But otherwise, if there is a mere procedural irregularity, then that finding or that sentence or that order will not be reversed, will not be altered in appeal, confirmation, or revision. Okay. Clause B says, no court shall stay the proceedings under this act. Again, the same reasoning to prevent unnecessary delay. Prevent unnecessary delay. Under this act, on the ground of any error, omission, or irregularity in the sanction granted by the authority, unless it is satisfied that such error, omission, or irregularity has resulted in failure of justice. ठीक है. Again, no court shall stay the proceedings under this act on any other ground, and no court shall exercise the powers of revision in relation to any interlocutory order. Now, what is an interlocutory order? It is a temporary form of an order, temporary order, which is not decided on merits of the case. It is not the final conclusive order, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी ऑर्डर, है ना. तो किसी भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पे रिविजन की पावर विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, अगेन टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिले. द सेम पॉइंट. ओके. इन determining under subsection 3 की whether the absence of or any error, omission, or irregularity in such sanction has occasioned or resulted in failure of justice. क्या टेस्ट होगा to determine whether there is a failure of justice or not? Court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceedings. अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ध्यान से देखो. इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दूसरी पार्टी को ऑलरेडी एट द वेरी बिगिनिंग पता था या फिर किसी अर्लियर स्टेज पे पता था कि जो सैंक्शन लिया गया है दैट इज नॉट एज पर द प्रॉपर फॉर्मेट, या फिर जो कंडीशंस हैं दैट आर नॉट ऑलरेडी बीन कंप्लाइड विद, तो वो तभी रेज कर सकती थी वो पॉइंट. बट दे वेटेड, है ना, एंड दे मिस यूज्ड दैट थिंग टू कॉज अननेसेसरी डीले. ठीक है, टू कॉज unnecessary delay when they could have raised that point earlier, but still they chose not to. Okay, so this is not done. Therefore,
ये बोला गया है कि फेलियर ऑफ जस्टिस को डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखोगे कि क्या वो किसी अर्लियर स्टेज पे वो पॉइंट रेज किया जा सकता था. इफ यस, देन नाउ यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. नाउ दैट ऑर्डर or that whatever that sentence is, that will be executed. Okay. Explanation. For the purposes of this section, error includes competency of the authority to grant sanction. अगर वो authority ही competent नहीं थी to grant sanction, then that you can say कि failure of justice हुआ है इस केस में, है ना. A sanction required for prosecution includes reference to any requirement that the prosecution shall be at the instance of a specified authority or with the sanction of a specified person or any requirement of a similar nature. तो कोई भी और legal requirement या compliances जो भी चाहिए होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर. Explanation में for the purposes of this section, error के अंदर, that will be coming under the key term error. Okay. अगर वो फॉलो नहीं हुए हैं the legal compliances that should have been followed along with that sanction, तो वो माना जाएगा कि failure of justice उसने किया है. And how will the failure of justice be accounted for? Through this, कि क्या वो point earlier stage पे raise किया जा सकता था. If yes, then that finding will be still enforced. Okay. ओके. अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि हम इस पे बाद में आएंगे, तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट. एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था उसके अंदर जिसमें द लोकपाल एक्ट के जो सैंक्शन की पावर है उसको सेव किया गया था. देयर वाज अ सेविंग क्लॉज रिलेटिंग टू लोकपाल एक्ट. व्हाट वाज दैट फॉर? The key provision that overrides Section 19 of Prevention of Corruption Act is Section 23 of the Lokpal and Lokayuktas Act 2013. जो लोकपाल एक्ट है, it establishes a special power and procedure for sanction when the investigation is handled by or under the direction of a लोकपाल. ऐसा क्यों? हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था यही चीज कि लोकपाल इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल अफेयर्स. अगर कोई हाई रैंक ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर के रिगार्ड में कोई ऐसे चार्जेस लगते हैं, देन लोकपाल इज द अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेट करेगा उन ऑफेंसेस को. तो इसीलिए उन चीजों को सेविंग क्लॉज में रख दिया गया है. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल क्लॉज. क्योंकि नॉर्मल पीसीए प्रोसेस में क्या होता है, सेक्शन 19 इज अप्लाइड of the Prevention of Corruption Act. Sanction is granted by the central government, state government, या हमने देखा, और the authority competent to remove the public servant in the residuary cases. लेकिन लोकपाल के प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी केस में लोकपाल इन्वॉल्व होता है तो उस केस में सेक्शन 23 of the Lokpal Act is applied. Lokpal itself has the power to grant the sanction for prosecution of a public servant accused of corruption, then notwithstanding anything contained in Section 19 of the Prevention of Corruption Act. This has been stated under Section 23 of the Lokpal Act. That is why जो लोकपाल की पावर है उसको सेव किया गया है. ओके. सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, the Lokpal Act grants the Lokpal, the apex anti-corruption body, the exclusive and overriding power to grant sanction for the prosecution of the officials it investigates. This prevents the normal bureaucratic procedure where the government often has to grant sanction against its own employees from delaying or blocking the prosecution of a case. जहां पे गवर्नमेंट के खुद के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट सैंक्शन देने की बात आती है, वहां पे कोई डीले ना किया जा सके या फिर किसी फॉर्म ऑफ ब्लॉकिंग ना की जा सके, एनी फॉर्म ऑफ ब्लॉकिंग, टू प्रिवेंट दैट, लोकपाल हियर इज गिवन द पावर. लोकपाल इज गिवन द पावर. इसीलिए लोकपाल की पावर को
सेव किया गया है. This clause in Section 19 of the Prevention of Corruption Act simply acknowledges that in cases where the Lokpal is involved, its own sanction rules, जो कि Section 23 बोलता है, will take priority over the general rules in the Prevention of Corruption Act. Is that clear? Now coming to section number 20. Now this section 19 was very important for you to understand क्योंकि इसमें बहुत कुछ था. तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, you guys can ask me in the comment section below. I am again and again repeating this because I want you to read each and every provision very carefully and be very clear with the concept. Presumption where public servant accepts any undue advantage. अब यहाँ पे shall presumption arise होती है under section 20. This is a section pertaining to presumption. क्या presumption है इसमें? Wherein any trial of an offence punishable under section 7, 11, it is proved that a public servant accused of an offence has accepted. ये प्रूव हो गया है, माइंडेड, कि this has been proved that that person has accepted or obtained or attempted to obtain for himself or for any other person any undue advantage from any person. It shall be presumed कि किस रीजन से वो किया गया, unless the contrary is proved that he accepted or obtained or attempted to obtain that undue advantage as a motive or reward under section 7. ऐसा माना जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी इम्प्रॉपरली परफॉर्म की, जो भी हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, या फिर फॉरबेयर की, forbearance to perform. That is why I am stressing upon this point that firstly you have to watch the part 1 of the Prevention of Corruption Act in order to understand these sections clearly. Okay. तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो एक फॉर्म ऑफ मोटिव या फिर रिवॉर्ड के लिए था अंडर सेक्शन 7 जो उसने अभी अनड्यू एडवांटेज ली है फॉर परफॉर्मिंग और टू कॉज परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पब्लिक सर्वेंट. और एज द केस में भी अगर कोई सेक्शन 11 का केस बन रहा है देन एनी अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट. जो हमने केस देखा था ना उसमें सिनेरियो की जो टैक्सिंग ऑफिसर वाला, कि टैक्सिंग ऑफिसर ने उसका शॉप का ऑडिट अप्रूव कर दिया एंड नाउ दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग फ्री वाउचर्स एवरी मंथ एंड इज एंजॉयिंग दैट फेवर्स, है ना. तो दैट वाज बीइंग डन विदाउट कंसिडरेशन, है ना. So here, if it is proved that that person is enjoying the benefits of the vouchers that are being given to him every month, then it shall be presumed that that is being done without that undue advantage is being enjoyed without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate. So here is a presumption with regard to section 7 and section 11 in case where it is proved that the public servant has taken some form of an undue advantage. Okay. Section 21, accused person to be a competent witness. Now this is also a very important provision. Any person charged with the offence punishable under this act. जिस पर्सन को चार्ज किया गया है, that means the person who is accused, he shall be a competent witness for the defense and may give the evidence on oath in disproof of the charges. उसको भी एक ऑप्शन दिया जाएगा खुद के अगेंस्ट जो चार्जेस है उनको डिसप्रूव करने का, made against him or any person charged together with him at the same trial, provided that he shall not be called as a witness except at his own request. Only voluntarily will he be allowed to present himself as a witness. He cannot be forced to do that. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him. Just because he is not able to give any evidence, that will not go against him. Okay. He shall not be asked, and if asked, shall not be required to answer any question
tending to show that he has committed or has been convicted of any offense other than the offense with which he is charged or is of bad character. Now this is very important point. ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा which implies his bad character, या फिर किसी अलग ऑफेंस के रिगार्ड में कि उसने वो कमिट किया है या नहीं, और क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑफेंस दैट ही may have been committed or may have not been committed. These are the bars that have been put. Okay. So he shall not be asked, and if asked, he shall need not answer any question tending to show that he has committed or been convicted of any offense other than the offense with which he is charged. सिर्फ उस offense के relation में आप questions पूछ सकते हो, and that too such questions जो उसके character को ना दिखाएं, bad character को, ठीक है? Unless the proof that he has committed or been committed of such offense is admissible evidence to show that he is guilty of the offense with which he is charged. Unless and until अगर किसी और offense के prove होने से उसके against present offense के ऊपर कोई effect पड़ रहा है और present offense के लिए कोई admissible evidence बन रहा है, then that question is justified to be asked. ठीक है? Okay. फॉर एग्जाम्पल प्ली ऑफ एलिबाई के केस में अगर उस पर्सन ने कोई और ऑफेंस किसी 5 बजे 5 PM पे उस पर्सन ने कोई और ऑफेंस कमिट किया था उस जगह पे, तो अगर वो एविडेंस इस ऑफेंस पे किसी तरीके से एविडेंस बन रहा है, सो देन दैट एविडेंस कैन बी गिवन. ओके. He has personally or by his pleader asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character. या फिर तब पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पे उसने खुद का गुड कैरेक्टर प्रूव किया है, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defense is such as to involve imputations on the character of the prosecutor और ऑफ एनी विटनेस फॉर द, या फिर उसने प्रोसिक्यूशन की इंटेग्रिटी को ही क्वेश्चन कर दिया. ध्यान से समझो इस चीज को. कब उसके बैड कैरेक्टर को लेकर के एविडेंस कब एडमिसिबल होगा? ईदर ही हैज पर्सनली और बाय हिज प्लीडर asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character. उसने खुद से अपने गुड कैरेक्टर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन या तो अपने विटनेस से पूछा है ना, या फिर उसके प्लीडर ने पूछा इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हिज ओन गुड कैरेक्टर. ठीक है. देन द बैड कैरेक्टर कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, या फिर ही हैज गिवन एविडेंस ऑफ हिज ओन गुड कैरेक्टर, or the nature or conduct of the defense is such as to involve imputations on the character of the prosecutor, या उसने प्रोसिक्यूटर की सैंक्टिटी या इंटेग्रिटी को चैलेंज किया है, देन आप उसके रिगार्डिंग भी बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकते हो उस पर्सन का. He has given evidence against any other person charged with the same offense. इस सिनेरियो में भी if he has given some evidence and against any other person charged with the same offense, then the fact of his bad character या फिर दूसरे questions ही उससे पूछे जा सकते हैं. Section 22, the Code of Criminal Procedure 1973 to apply subject to certain modifications. Now this again has been done in order to prevent the unnecessary delay. क्योंकि करप्शन के केसेस में डिले नहीं हो सकता. ठीक है. देयर इज दिस जीरो टॉलरेंस फॉर डिले. सो इन ऑर्डर टू इनकलकेट दिस थिंग, यहाँ पे द प्रोविजंस ऑफ CRPC shall in their application to any proceeding in relation to an offense punishable under this act have effect as if. जो सबसेक्शन है ऑफ 243 फॉर द वर्ड्स द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन. नॉर्मली जो CRPC का प्रोसीजर है उसमें ये
बोला जाता है कि जो अगर आपको डिफेंस पेश करना है अपना, then the accused shall be called upon and then he can present his defense. But यहाँ पे what has been substituted, the accused shall then be required to give in writing at once or within such time as the court may allow. पहले उसको a list of persons देना पड़ेगा whom he proposes to examine as his witnesses and of the documents on which he proposes to rely, and he shall then be called upon. So this process has been made very clear and very stringent due to the severity of the offenses concerned. Okay. Then coming to the next point, in subsection 2 of section 309, after the third proviso, the following proviso has been inserted. Provided also that the proceeding shall not be adjourned or postponed merely on the ground that an application under section 397 has been made by a party to the proceeding. 397 हमें पता है revision से deal करता है, revision by high court, है ना? So just because an application for revision is pending, the proceeding cannot be adjourned, cannot be postponed. Again, the same reason, to prevent delay. That is unnecessary. Okay. Then after subsection 2 of section 317, the following subsection has been inserted, namely, notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2, the judge may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, proceed with the inquiry or trial in the absence of the accused or his pleader. Now, why has this been added? Again, the same reason. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि accused जानबूझ के आ ही नहीं रहा कोर्ट में, या फिर उसका प्लीडर नहीं आ रहा है कोर्ट में in order to delay the trial, है ना? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिया गया है that notwithstanding anything contained in the earlier subsections, the judge may, if he thinks fit and for reasons to be recorded in writing, he can even proceed with the inquiry or trial in the absence of the accused or his pleader. Okay. Now, in subsection 1 of section 397, before the explanation, the following proviso has been inserted, namely, provided that where the powers under this section are exercised by a court on an application made by a party to such proceedings, court shall not ordinarily call for the record of the proceedings. अगर हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है the powers of revision, he need not call the whole record. Again, the same reason. कि अगर सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, then again that process will get delayed. Only and only due to this reason, to prevent unnecessary delay, ये सारे modifications हैं वो किए गए हैं without giving the other party an opportunity of showing cause why the record should not be called for, है ना? अगर आपको रिकॉर्ड देना भी है हाई कोर्ट को, तो आपको पहले दूसरी पार्टी को एक मतलब शो कॉज करना पड़ेगा that why the record should not be called for if it is satisfied that the examination of the record of the proceedings may be made from the certified copies. ठीक है? अगर examination can be easily done by the certified copies, then that can be allowed. Section 23. Coming to section 23, particulars in a charge in relation to an offense under section 13 clause 1 subclause A. Now यहाँ पे क्या बोला गया है? Again that same thing has been done. 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के रिलेशन में ये बोला गया है कि आपको सारी डेट्स, किन किन डेट्स पे क्या क्या ऑफेंस करप्शन के रिलेटेड ब्राइब कब ली गई, कब दी गई, एग्जैक्ट डेट्स यू नीड नॉट मेंशन. क्यों? क्योंकि ये अननेसेसरी डीले करवाएगा प्रोसेस को. यू कैन नॉट अकाउंट फॉर द एग्जैक्ट डेट्स, क्योंकि कितनी बार चीजें होती हैं वो याद, उनको इतना नहीं याद रहता कब कब ब्राइब मांगी गई, कब कब दी गई. देयर इज अ सर्टेन n number of transactions that have already taken place. So notwithstanding anything contained in the CRPC, when
an accused is charged with an offence under clause A of subsection 1 of section 13, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged. एक तो आप बस इतना बता दो, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दो, दैट इज मोर देन इनफ. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है, प्लस एंड डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज अलेज्ड. और बस इतनी डेट्स दे दो कि ये डेट से लेकर के ये डेट तक के बीच में ऑफेंस हुआ है. यू नीड नॉट गिव द अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी डेट. ओके, is alleged to have been committed without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be the charge of an offense within the meaning of section 219 of the CRPC. प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप वो डेट्स दे रहे हो ना, ये फर्स्ट डेट और ये लास्ट डेट, ये विद इन एन ईयर की डेट होनी चाहिए. शैल नॉट एक्सीड 1 year. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 24, जो कि अब ओमिट हो चुका है बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2018. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक है provision. Statement by bribe giver not to subject him to prosecution. अब क्या है कि जो 2018 अमेंडमेंट एक्ट है, हमें पता है उसने ब्राइब गिवर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इवन द ब्राइब गिवर इज बीइंग मेड लायबल टू थ्रू द 2018 अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन इससे पहले भी क्या होता था कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे डायरेक्टली सेक्शन 8 तो नहीं था पहले, दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द 2018 अमेंडमेंट एक्ट ओनली. बट पहले क्या था, पहले फॉर कॉन्स्पिरेसी या फिर फॉर अबेटमेंट इन सर्टेन केसेस ब्राइब गिवर वाज मेड लायबल. ठीक है, डायरेक्टली ही वाज नॉट बीइंग मेड लायबल अंडर सेक्शन 8 क्योंकि वो तो इंट्रोड्यूस ही 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है. बट अर्लियर ऑल्सो फॉर कॉन्स्पिरेसी फॉर अबेटमेंट उस पर्सन को लायबल किया जाता था. बट जो ये सेक्शन था ना, सेक्शन 24, ये उस ब्राइब गिवर को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था. किस फॉर्म ऑफ, कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था, ये सेक्शन ये बोल रहा था कि अगर वो पर्सन, ठीक है, जो ब्राइब गिवर है, जिसको उसने ब्राइब दी है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देता है, अगर सारी चीजें उसके रिगार्डिंग में बता देता है, ठीक है, कि उसने कब ब्राइब ली, कैसे ब्राइब ली, that means if he testifies against the person who has taken bribe from him and states all the facts and circumstances of that particular case, then he was provided blanket immunity in that case. उसको immunity दे दी जा रही थी. He was relieved from prosecution even for that abatement and conspiracy. ठीक है, for any offense that is being made against him. तो जब ये 2018 का अमेंडमेंट एक्ट आया तो हमने सेक्शन 8 लाया. सेक्शन 8 किससे डील करता है, ब्राइब गिवर को पनिश कर रहा है. अगर ये सेक्शन अभी भी रहता सेक्शन 24, then this would have been in contradiction to section 8 because section 8 is making the person who is giving the bribe liable, but this section is providing immunity to that person just because आप दूसरे पर्सन के खिलाफ टेस्टिफाई कर रहे हो जो ब्राइब लिया जिसने आपसे, दैट विल नॉट मेक यू करेक्ट, है ना, दैट विल नॉट मेक यू. सी द थिंग इज कि अगर उस पर्सन ने, द पर्सन अंडर section 24 was provided immunity अगेंस्ट विच केस, पहले तो ये बहुत ध्यान से देखो किस केस के लिए उसको इम्यूनिटी दी जा रही थी, जहां पे वो दूसरे पर्सन से के रिगार्ड में सारी चीजें बता रहा था कि इसने मेरे से ऐसे ब्राइब ली, ऐसे ब्राइब ली, इस डेट पे ब्राइब ली, इस सिनेरियो में ब्राइब ली, एंड वेयर ही वाज लिटरली गिविंग ऑल द डिटेल्स, उसको इम्यूनिटी दे दी जाती थी. हाउ फॉर वाज दिस करेक्ट? दिस वाज नॉट correct. That is why
That is why this section 24 has now been omitted by the Prevention of Corruption Amendment Act 2018, because this Amendment Act brought in the concept of bribe giver, through which even the person giving the bribe is made liable. Okay. तो ये भी एक तरह का इम्यूनिटी की तरह एक्ट कर रहा था सेक्शन 24, कि अगर उसने दूसरे पर्सन के खिलाफ सारी डिटेल्स दे दी, देन दैट पर्सन इज रिलीव्ड. सो दिस वाज नॉट डन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन डन अवे. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 25. अब हमने ऑलरेडी सेक्शन 5 पढ़ा था, उसको ध्यान में रखना इसको पढ़ते टाइम. मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स और अदर लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड. अब हमने सेक्शन 5 में ये चीज देखी थी कि जब हमने प्रोसीजर देखा था ना, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली जिस सेक्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ. हाँ, सो दैट सेक्शन वाज 475 CRPC, जो हमने इसके अंडर देखा था. 475 ऑफ CRPC एंड 521 ऑफ BNSS. क्या बोलते थे ये पर्टिकुलर सेक्शंस, कि अगर ऐसा पाया जाता है कि जिस पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दैट पर्सन फॉल्स अंडर सम मिलिट्री लॉ या फिर नेवल लॉ या फिर एयर फोर्स लॉ, आर्मी लॉ, तो उस पर्सन को फॉरवर्ड किया जाता था टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटीज कमांडिंग ऑफिसर. ठीक है, उस एक्ट की पर्टिकुलर अंडर जो कमांडिंग ऑफिसर फॉल करते थे उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता था. दैट पर्सन वाज फॉरवर्डेड. So nothing in this act shall affect the jurisdiction exercisable by or the procedure applicable to any court or other authority under the Army Act, Air Force Act, Navy Act. मतलब ये सारे जो acts हैं इनको affect नहीं किया जाएगा. These are saved. ठीक है, इनकी जुरिस्डिक्शन पे अफेक्ट नहीं होगा. अगर पाया भी जाता है कि कोई पर्सन इन एक्ट्स के अंदर फॉल कर रहा है, देन दैट पर्सन विल बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव कमांडिंग ऑफिसर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था अंडर सेक्शन 5 विच डेल्ट विद द प्रोसीजर एंड पावर्स. उसमें हमने देखा था कि 475 ऑफ CRPC और नाउ द 521 ऑफ BNSS इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, the Border Security Force Act, the Coast Guard Act, and the National Security Guard Act. These all acts are saved. Okay. For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of any such law as is referred to in subsection 1, the court of a special judge shall be deemed to be a court of ordinary criminal justice. Now coming to section 26, special judges appointed under Act 46 of 1952 to be special judges appointed under this act. जो हमने ऑलरेडी देखा था ना बैकग्राउंड में ऑफ द प्रीवियस वीडियो, वी हैव सीन ऑलरेडी कि बैकग्राउंड में एक एक्ट था, एक्ट नंबर 46 ऑफ 1952, है ना, जो आया था. तो उस एक्ट के अंदर भी अगर कोई स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया था ना, तो ये माना जाएगा कि वो स्पेशल जजेस इसी एक्ट के अंदर अपॉइंटेड है. ठीक है, every special judge appointed under the Criminal Law Amendment Act 1952 for any area or areas and is holding office on the commencement of this act shall be deemed to be a special judge appointed under section 3 of this act and for that area or areas, and accordingly on and from such commencement every such judge shall continue to deal with all the proceedings pending before him. ठीक है. नाउ सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ अपील एंड रिविजन. तो इस केस में ये सारी जो अपील और रिविजन की पावर है दैट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट है दैट विल बी द कोर्ट ऑफ सेशन. Subject to the provisions of this act, the High Court may exercise so far as they may be applicable all the powers of appeal and revision conferred by the CRPC on a High Court as if for the Court of Special Judge were a Court of Session. हमने ऑलरेडी देखा था कि जो स्पेशल जज भी था वो किस क्वालिफिकेशन का था, either he has to be a special judge, session judge or additional session judge or assistant session judge. We have already seen this in the previous video, the qualifications for becoming a special judge under Prevention of Corruption Act 1988. ठीक है, तो इसीलिए जो स्पेशल जज की कोर्ट थी, we can say that that is a court of session. ठीक है, as if the court of special judge were a court of session, this has been deemed. So that is why जो appellate powers हैं या जो revisional powers हैं, that will be exercised by the High Court. Now section 28, act to be in addition to any other law.
Now why has this been mentioned? अब अगर कोई करप्शन के केसेस में there are various service rules also ना, तो कुछ सर्विस रूल्स भी होते हैं पर्टिकुलर सर्विस के। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस एक्ट के अंदर चार्ज कर दिया गया देन यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सम अदर एक्ट। दिस इज नॉट द केस। The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. And nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this act, be instituted against him. Is that clear? If not, you can ask me in the comments below. Section 29, Amendment of the Ordinance 38 of 1944. In the Criminal Law Amendment Ordinance 1944, इन सबसेक्शन 1, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू काफी ड्यूरेशंस, काफी चीजें जो है मॉडिफाई कर दी गई हैं। दिस अमेंडमेंट इज ऑफ ऑर्डिनेंस, इज ब्रॉट थ्रू ऑर्डिनेंस 1954. In subsection 1 of section 3, subsection 1 of section 9, clause A of section 10, subsection 1 of section 11, subsection 1 of section 13, for the word state government, जहाँ पे सिर्फ state government mentioned था, वहाँ पे अब क्या mentioned है? The words state government or as the case may be, the central government shall be substituted. तो ये substitute किया जाएगा, ठीक है? Has been done, it has been substituted. In section 10, in clause A, for the words 3 months, the words 1 year shall be substituted. तो ये भी आपको याद रखना है कि अब जो 10 clause A की duration है, earlier it was 3 months, but now the limitation period is what? 1 year. In the schedule, paragraph 2 has been omitted. In paragraphs 2 and 4, after the words local authority, the words and figures or a corporation established by or under a central, provincial or state act under the section 617 of the Companies Act को substitute कर दिया गया है, shall be inserted. After the words or authority, the words or corporation or body or government company or society shall be inserted. For paragraph 4a, the following paragraph shall be substituted, namely an offence punishable under the Prevention of Corruption Act 1988. In paragraph 5, for the words and figures, items 2, 3 and 4, the words, figures and letter 2, 3, 4 and 4a shall be substituted. Now section 29a, power to make rules. अब कौन बनाएगा rules इस act के अंदर? Central government is given the power to frame rules. और किस रिस्पेक्ट में रूल्स फ्रेम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर सैंक्शन को लेकर के कोई गाइडलाइंस देनी है तो 19 क्लॉज 1 में, सेक्शन 9 के अंदर टू प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस, जो कि हमने देखा था ना कि कोई भी अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने डिफेंस लेना है ना, तो वो क्या बोल सकती है कि हमारे यहाँ पे तो गाइडलाइंस वर इन प्लेस, है ना, सो दैट वाज एक्टिंग एज अ गुड डिफेंस फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए that can be done. उसके regarding rules can be formulated by the central government. Any other matter which is required to be or may be prescribed. Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions. And if before the expiry of the session, immediately following the session, or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, then the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be. So, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. सेक्शन 30, रिपील एंड सेविंग. अब क्या रिपील किया गया है? हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि आईपीसी के अंदर दिस हैज गॉट डिलीटेड फ्रॉम हियर. सेक्शन 161 से लेके 165A हैव बीन रिपील्ड. व्हाई? क्योंकि नाउ दोज ऑफेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस प्रेजेंट एक्ट, एंड दिस प्रेजेंट एक्ट में हमने कंसोलिडेट कर दिया है सारे ऑफेंसेस को विद रिगार्ड टू करप्शन. ठीक है. इवन वी हैव एनहांस्ड द पेनल्टीज. एनहांसमेंट ऑफ पेनल्टीज हैज बीन डन थ्रू दिस एक्ट. ओके.
Notwithstanding such repeal, but without prejudice to the application of Section 6 of the General Clauses Act, anything done or any action taken or purported to have been taken or taken under or in pursuance of the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the pursuance of the corresponding provisions of this Act. Okay. Now, Section 31 talks about omission of certain sections of Act 45 of 1860. This is also repealed by the Amending Act of 2001. Now, coming to the case law portion, there are some key case laws that we need to see. For phase 1, I have mentioned the investigation case laws pertaining to section 17A. सेक्शन 17A का क्या प्रिंसिपल है? प्रायर अप्रूवल फॉर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, है ना. हमने देखा था 3 अथॉरिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर केसेस में जो अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू remove that particular person. So in the case of GJ Raja versus Tejraj Surana 2019 Supreme Court case, the provision is substantive, not merely procedural. It applies prospectively only to the offences committed after the 2018 amendment. It does not invalidate investigations that began before the amendment date. Okay, so this case gave a prospective effect to section 17A. Okay. Section 17, authorized officer to investigate, है ना. सी रंगा स्वामी वर्सेस कर्नाटका लोकायुक्त के केस में ऑफ 1998 सुप्रीम कोर्ट, the scope of authority was laid down, clarified that the police officers on deputation to special agencies like Lokayuktas can be entrusted with investigation powers under this section. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता भी इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस. ठीक है, स्पेशल केसेस के लिए लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी ऑफिसर्स. Lokpal is for central affairs, Lokayukta for state affairs. Okay. Prosecution Sanction, Section 19, Phase 2. Now coming to the Prosecution Sanction, Section 19 case laws. Now 19 clause 1 का ये principle है that there is the requirement of a mandatory sanction, है ना, before the court takes cognizance of the offense. So in the case of Shibendraat Verma versus Union of India, 2024 Supreme Court, it was held that it was a trial court taking cognizance without sanction is a procedural error, but it is not fatal to the proceedings unless it results in the failure of justice. तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा है सेक्शन 19 के अंदर कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है then that finding will be enforced. ठीक है, बट अगर there is a failure of justice तो फिर हम उसको खत्म कर देंगे, then that will not be proceeded with. Sanction granted later may cure the defect, referencing to section 19 clause 3. Then again there is this case law, timely disposal of sanction request by the competent authority के रिगार्ड में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह. Timelines were imposed. The sanctioning authority must decide on the request within 3 months, extendable by 1 month. Failure to adhere to the timeline can be reviewed by the courts for potential deemed sanction. अगर वो 3 months के बाद, in fact, तो जो further period है 1 month के बाद भी अगर अपना decision नहीं दे पाया with regard to sanction, that authority is not able to provide you with a decision with regard to sanction, then there will be a deemed sanction जो कि मान लिया जाएगा कि sanction has been granted. ठीक है, या फिर direction to proceed कर दिया जाएगा. Now coming to section 20, which states the statutory presumption for the guilt of accepting an undue advantage. इसके रिलेशन में केस है स्टेट ऑफ लोकायुक्ता पुलिस वर्सेस सीबी नागराज 2025 का केस है ये. डिमांड फर्स्ट डॉक्ट्रिन, इसमें वही चीज बोली गई थी कि that to invoke the presumption under section 20, the prosecution must first prove the foundational facts beyond a reasonable doubt. क्या क्या प्रूफ होना चाहिए कि एक तो डिमांड थी फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एंड
सेकेंडली एक्सेप्टेंस भी था उस इलीगल ग्रेटिफिकेशन का. यहाँ पे आप ग्रेटिफिकेशन की जगह पे अनड्यू एडवांटेज कर लेना, क्योंकि ग्रेटिफिकेशन एक ओल्ड टर्म हो चुका है. अब 2018 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या टर्म आया है? अनड्यू एडवांटेज. ठीक है, तो आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 कि देयर वाज अ डिमांड फॉर अनड्यू एडवांटेज प्लस देयर वाज दिस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अनड्यू एडवांटेज. mere recovery of tainted money without proof of demand is not sufficient for conviction. Okay. Now, coming to the conclusion, the Prevention of Corruption Act 1988 is a comprehensive weapon. We have already seen this, that it lays down the principle that punish the corrupt, protect the honest, and strengthen public trust. Okay. Now, what are the key takeaways for today's session? It has फोकस्ड jurisdiction. The act ने, इस एक्ट ने एस्टैब्लिश किया स्पेशल जजेस को, है ना, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राई कर रहे थे करप्शन केसेस को, ensuring expertise and dedicated focus. Then we studied the broad scope of public servant. कितने सारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इस केस में, covers all levels of government service, employees of local authorities, persons performing public duty, सबको रखा गया under the head public servant. ठीक है, so that nobody can escape the liability under this act. Then statutory presumption देखा हमने section 20 का, how it places the burden of proof on the public servant to explain any undue advantage that has been received by him, tilting the scales in favor of anti-corruption efforts. Then we saw procedural modifications under section 22 and 23, which streamlined the trial by allowing the judge to refuse adjournments and simplifying the way misappropriation charges are framed, accelerating the judicial process. क्योंकि हमने सारे जो provisions देखे, हमने देखा कि वो unnecessary delay को prevent करने के लिए थे सारे provisions. मैंडेटरी सैंक्शन देखा हमने सेक्शन 19 में, जिसमें हमने टाइम बाउंड भी चीजें देखी कि ओनली विद इन 3 मंथ या फिर मैक्सिमम एक्सटेंडेबल टू 1 मंथ के अंदर यू हैव टू गिव द डिसीजन विद रिगार्ड टू सैंक्शन. So these are all the key takeaways from today's session. Now I would like to tell you that if you need the PPT for this slide, then you can tell me in the comment section below. Then I'll be providing you with a link either in the comment section, or I'll be creating a Telegram group for the same, and I'll be providing you with the PPT there itself. Okay, and I hope you liked today's lecture. If yes, do comment and tell me that you did. And if you have any doubts pertaining to today's session, you can feel free to ask me in the comment section below. And hit the like button, hit the subscribe button, and even comment down below in order to appreciate me, so that I can bring more videos, more informative videos which would help you in the career of yours. Thank you so much.